हे एवरीवन, वेलकम बैक। एवरी टाइम यू ओपन यूट्यूब या फिर अगर आप कोई न्यूज़ चैनल खोल के देखोगे, आपको हर बार कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी जिसमें एआई की वजह से एक नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, और मे बी देर इज सम न्यू इन्वेंशन विच इज़ यूजिंग एआई। नाउ क्रिएटिंग एन एआई इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट उसको बार बार इम्प्रूव करना एंड वो 6 मंथ्स में एक्सपायर ना हो जाए या फिर 1 साल में उसको रिन्यू ना करना पड़े, वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड दैट्स वेयर एआई मॉडल लाइफ साइकिल कम्स इन। सो आज के टॉपिक में हम लोग प्रोजेक्ट स्कोपिंग देखेंगे। हाउ डू यू स्टार्ट क्रिएटिंग एन एआई, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, और कौन से डिसीजंस जो आपको लेने पड़ते हैं एट द बिगिनिंग जब आप डिसाइड करो कि यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एआई। सेकेंड पार्ट इज़ द मेजर पार्ट, जहाँ पर सारा डिज़ाइनिंग होता है, जहाँ पर आपका मॉडलिंग होता है, where you create a program or where you train the model in such a way that it is useful. And finally, once you are done with creating a model, you have something to deploy in the real world, which means finally आप real life में अपने model को use कर सकते हो. Now let's take an example of a self-driving car. Now we all know by now that artificial intelligence plays the most important role in any self-driving car. So जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, it is definitely trying to perform better than a human would, because humans need to look at the road कि रोड पे कौन सी व्हीकल्स आ रही हैं, पीछे से कौन सी व्हीकल्स आ रही हैं, उनको साइड में देखना पड़ता है कोई व्हीकल तो नहीं है, मे बी कोई ट्रेसपासर तो नहीं है, या मे बी दे ऑल्सो नीड टू लुक एट द मैप. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय अ ह्यूमन, और ये सब चीज़ें मैनुअली होती हैं. बट व्हेन यू आर यूजिंग एन एआई सिस्टम, the system tries to outperform the human. Basically, in every sense, an AI system will be performing better than a human, right? So AI system पे बहुत ज़्यादा responsibility होती है उस time पे. For example, let's say Tesla is there. Now Tesla creates 100 million cars every year, just a ballpark figure, जो US में यूज़ हो रही हैं, right? How many times have we seen a news जहाँ पर एक टेस्ला कार का एक एक्सीडेंट हो गया? फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ न्यूज़ अ कपल ऑफ मंथ्स बैक कि एक टेस्ला ने किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट कर दिया. नाउ इट इज़ अ वेरी रेयर सिनेरियो, बट it is very important that such things do not happen, because lives are at stake. A company's reputation is also at stake, and there are a lot of legal matters also involved. So we need to create an AI system which is very robust and which does not fail in any of the scenarios, so that जो Tesla company है इसका नाम भी खराब ना हो, and there is no loss either monetary or human. So that's where an AI model life cycle comes in. It consists of a couple of steps. जैसे आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, और मे बी आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करते हो, उसमें थोड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, थोड़े स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ट्राई टू प्लान इट आउट, देन you actually work on the design and maybe do the actual work. When all these things are done, you try to test it and then finally you deploy it. इसमें आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? सो बिफोर योर एग्जाम आप करते हो अपनी प्लानिंग. यू डिसाइड कि मैं दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करूँगा. देन उसके बाद यू एक्चुअली कलेक्ट योर नोट्स. आपने अपने नोट्स कलेक्ट कर लिए, आपने अपने रिविजन लेक्चर्स की वीडियोस डाउनलोड कर ली. देन आफ्टर दैट यू स्टडी. जब आपका पढ़ाई हो जाए, जब आपने पूरा पढ़ाई कर लिया है, उसके बाद आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो और मे बी टेस्ट करते हो कि हाउ आर यू एक्चुअली परफॉर्मिंग बिफोर द मेन टेस्ट इज देयर. सो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो कि आपके कौन से चैप्टर्स अभी भी बाकी हैं, कौन से चैप्टर्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो. देन अकॉर्डिंगली यू रीप्लान योर स्ट्रैटेजी. आप फिर से डिसाइड करते हो कि अब से मैं 1 to 2 आवर्स स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए निकालूंगा एंड उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा. सो दिस इज एन एंटायर साइकिल or a life cycle which is used when you're preparing for your exams. Similarly, when any big company like Facebook, YouTube, or maybe Google, or maybe Samsung, जब ये सब कंपनीज अपने टेक प्रोडक्ट्स के साथ बाहर आती हैं, they also follow a similar procedure.
Because once you take out a mobile phone या फिर maybe once you release a new AI model, वो फाइनल मॉडल नहीं है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज दैट प्रोडक्ट विल हैव सम डेफिशिएंसीज, उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई एरर्स आएंगे, यू नो दैट्स व्हाई देयर इज अ वारंटी विद एवरी टीवी यू गेट, ताकि अगर आपके टीवी में या फिर आपके मोबाइल फोन में कोई भी प्रॉब्लम आए, सो दैट यू कैन स्टार्ट रिपेयरिंग इट अगेन. सो द कंसेप्ट ऑफ AI मॉडल लाइफ साइकिल हेल्प्स अस मैनेज दिस कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो, जिससे आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है इट बिकम्स वेरी नाइस. So model life cycle is nothing but a sequence of steps which is followed to make your end product viable and very dependent. So model life cycle में there are a couple of steps. Now in class 10th you have studied AI project cycle. If you had AI in your class 10th, अगर नहीं था then we will look at it again. So what happens is every AI model needs some data. हर एक AI model को data चाहिए होता है जिससे वो learn करे, जिससे वो अच्छा perform करे, and then finally it can be used in the real world. So model life cycle में there are a couple of steps. सबसे पहले आप decide करते हो कि आपको कौन सी problem solve करनी है, उसके लिए फिर आप थोड़ा data collect करोगे, right? Data collect करने के लिए there are a couple of rules. जैसे data engineer होता है, he or she collects the data from the internet, और मे बी पर्सनली जाके कहीं से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देर आर मॉल्स और देर आर कस्टमर सर्विस, और मे बी जस्ट वेब स्क्रैपिंग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स. सो डेटा इंजीनियर ये सारा डेटा कलेक्ट करके एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कंसल्ट करता है कि उसका डेटा करेक्ट है या नहीं. देन ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है एक डेटा साइंटिस्ट को. और डेटा साइंटिस्ट का एक जॉब है, he wants to display this data in such a way that इस डेटा में से एक स्टोरी निकले. What is this story? So for example, I have a lot of data from YouTube. For example, I'll take my example. I have a YouTube channel. Now YouTube channel में I know where are the views coming from, which videos are getting more views, where are the viewers from, कौन सी city से viewers हैं, what is the age group of the viewers. So according to all this data, I can create a story that yes, because the exams are coming near, students with age group of 15 to 17 are looking at more of my videos which are related to AI, right? So this is the story which is created using the data. Now this is just about YouTube. There can be a lot of other things जिसका भी data available हो. Finally, this data is sent out to an ML engineer. So ML means machine learning. मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास ये डेटा आता है, तो वो ट्राई करता है कि इस डेटा के थ्रू वो एक ऐसा मॉडल क्रिएट करे जिससे प्रेडिक्शंस ईजी हो जाए. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव अ मशीन लर्निंग इंजीनियर दिस डेटा, और मे बी आई कैन माई सेल्फ डू इट बिकॉज आई एम वर्किंग इन ऑल दीज थिंग्स, आई कैन स्टार्ट टू प्रेडिक्ट कि मेरे व्यूज नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर में कितने होने वाले हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ एन ML इंजीनियर. आजकल ये सारे रूल्स जनरली एक पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने सारे लोग चाहिए, बट फॉर बिगर कंपनीज जहाँ पर डेटा बहुत सारा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू नीड टू हैव स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स जो ये सारे स्टेप्स सॉल्व करें. एंड देन फाइनली जब एक मॉडल क्रिएट हो जाए जो आप यूज़ कर सकते हो, इवेंचुअली यूज़र के पास वो मॉडल जाता है, बट इन द फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट और एन एप्लीकेशन, जिसको वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के वे में यूज़ कर सकता है. So AI model life cycle is a cyclical process. So let's look at the first stage. First stage is, I think, very common, जहाँ पर हम लोग project scoping करते हैं. We try to understand what is the problem. ये जो problem है ये किसको हो रही है, and ये problem क्यों हो रही है, and कहाँ पर वो solution डाला जाए जिससे वो problem solve हो जाए. For example, देर इज़ अ रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम है कि एवरी डे देर इज़ 50 kg और 60 kg ऑफ फूड बीइंग वेस्टेड, बट ऑन सम डेज द फूड इज़ ओवर यूटिलाइज्ड, किसी दिन वेस्टेज हो ही नहीं रही हो. सो द प्रॉब्लम इज ऑफ अ फूड वेस्टेज. हाउ कैन यू सॉल्व इट? हु आर द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? हाउ कैन AI सॉल्व इट?
ये सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इन द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन. Not only this, but we also try to find out what are the various things which are necessary to solve this problem. For example, we can say what is the amount of data which will be required for this entire project कि जिससे ये problem solve हो जाए. Who will be collecting all this data, जो भी requirement है वो सब चीज़ें कौन करेगा. And finally ये strategy जो है, ये जो plan है, ये कितने दिन का होना चाहिए, कितने months का होना चाहिए, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे. सो ये सब चीजें जाती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में. बट नॉट ओनली दिस, एट दिस स्टेज यू ऑल्सो नीड टू डिसाइड, इज AI ट्रूली नेसेसरी? बिकॉज AI इज वेरी एडवांस्ड इन नेचर, काफी हाइप भी है AI का. पीपल वॉन्ट टू यूज AI इन एवरीथिंग, इवन वेयर इट इज नॉट नीडेड. सो एट दिस पॉइंट और एट दिस स्टेज वी ट्राई टू डिसाइड कि ये जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं इसमें AI का ज़रूरत है या नहीं है. सो वंस इट इज़ डिसाइडेड कि yes, AI is necessary, we try to define some success metrics. What are these metrics? They define, or maybe they tell us if our solution is working well or not. So before we create a solution, we create a couple of metrics जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा जो सोल्यूशन है वो वर्क कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, if a airplane is flying, right, what are the various metrics associated? What is the height of the plane? What is the weight of the plane? What is the distance that is covered by the plane? So all these metrics decide if the airplane will successfully land at its destination. Similarly, जो success metrics are also defined for a project. So stage 1 और स्टेज 2 में एक पॉइंट कॉमन आता है, वो है डेटा कलेक्शन का. यू कैन इंक्लूड इट इन द स्टेज 1 इटसेल्फ इफ द डेटा इज नॉट वेरी ह्यूज, डेटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो. बट इफ डेटा रिक्वायरमेंट इज वेरी लार्ज, फॉर एग्जाम्पल बिग कंपनीज लाइक टेस्ला, SpaceX, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सच कंपनीज गो टू स्टेज 2 जहाँ पर ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. एंड फाइनली दे ऑल्सो डिज़ाइन which kind of a machine learning model or a AI model will be used. So the data which is collected is basically of two types only. First is the primary data. This type of data is collected for the first time and directly from the place that it is needed. For example, if we are trying to create a facial recognition system, so the primary data for that would be asking 500 people to take a photo of their faces and send it. So that will be the primary data because it is directly collected. It also is complicated to find because इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, and जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत लगती है वो जनरली ज़्यादा कॉस्टली भी होता है. What can be the secondary data? सेकेंडरी डेटा टाइप कुड बी कि आपको लोगों से जाके उनकी फोटोज नहीं मांगनी है. यू कैन डायरेक्टली गो टू गूगल और यू कैन गो टू डायरेक्टली वेबसाइट्स विच ऑलरेडी हैव दिस डेटा प्रेजेंट. सो ये डेटा कलेक्ट होता है एग्जिस्टिंग सोर्सेज से एंड दिस इज जनरली कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज मीन्स यू पे देम टू प्रोवाइड यू द डेटा. इट इज वेरी ईजी एंड दैट्स व्हाई इट ऑल्सो कॉस्ट्स वेरी लेस. बट प्राइमरी डेटा जो होता है इसका क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा होता है एंड अगर हमारा वो प्राइमरी डेटा कम पड़ रहा है देन वी गो ऑन टू द सेकेंडरी डेटा. वंस वी हैव कलेक्टेड द डेटा, द नेक्स्ट पार्ट कम्स दैट वी नीड टू लेबल द डेटा, राइट. इफ वी हैव कलेक्टेड a data of faces, right, so we need to label the various parts of the faces, like these are the eyes or this is the nose or this is the mouth. So ये सब labeling जो होता है इनिशियली फॉर द ट्रेनिंग फेज ये मैनुअली करना पड़ता है ह्यूमंस को. इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क. सो इफ़ यू टॉक अबाउट GPT और मे बी GPT-3, GPT-4 जो चल रहा है, वाई इज इट परफॉर्मिंग सो वेल? बिकॉज उसका जो ट्रेनिंग डेटा है वो एनोटेट किया गया है ह्यूमंस के बारे. ह्यूमंस ने मिलियंस ऑफ आवर्स लगा के डेटा कलेक्ट किया एंड डेटा को लेबल किया सो दैट इट बिकम्स अ क्वालिटी डेटा एंड इट कैन बी यूज्ड टू ट्रेन AI मॉडल्स.
सो वंस यू डन विद योर लेबलिंग पार्ट, आपने अपनी इमेजेस को लेबल कर दिया, फिर डेटा को लेबल कर दिया, नेक्स्ट पार्ट इज डिसाइडिंग what kind of a machine learning model you want to use. There can be various things that can be used. For example, यहाँ पर हम लोग डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं. Each of these models have their own advantages and own disadvantages. बहुत ज़्यादा यूज केसेस होते हैं. अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि कोई पर्सन अपना लोन पूरा कर पाएगा या नहीं, तो हम लोग डिसीजन ट्री यूज करते हैं. अगर हम लोग इमेज डेटा सेट के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग को प्रेडिक्ट करना है इज इट अ कैट और इज इट अ डॉग, न्यूरल नेटवर्क्स समहाउ परफॉर्म बेटर. So it all comes from the experience of the machine learning engineer or the AI engineer. But at this point we also try to decide कि कौन सा मॉडल ज़्यादा beneficial होगा. So there are various kind of AI models. First is a binary classification model. These terms can be very difficult to remember. I know थोड़ा difficult हो सकता है क्योंकि complicated terms भी हैं इसमें. So let's take it by the basics. Binary means two. क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले. सो टू क्लासेस जिसमें होती हैं, और मे बी जहाँ पर आपको दो चीज़ें प्रेडिक्ट करनी हो, मे बी येस और नो, और मे बी गुड और बैड. जहाँ पर हम लोग पास दो ऑप्शंस होते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल. मल्टी क्लास मीन्स दो क्लासेस के बदले आपके पास मोर देन टू क्लासेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you want to classify a photo as a cat, a dog or a panda, right? It can be more than that, or an elephant. Or maybe आपके पास एक sound है, you want to classify it as rock music, jazz music or hip hop music, or maybe rap music, or maybe R&B music. So जब आपके पास दो से ज़्यादा क्लासेस हो तब हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करते हैं. Finally, when we do not want to divide our answer into classes, or rather we want to predict a value. For example, how much marks will you score in your 12th boards, or maybe how much will it rain in Bombay in the upcoming monsoon season, or how much will India score in the next T20 match. So at this point जब हम लोग के पास एक नंबर प्रेडिक्शन हो तब उस टाइम हम लोग रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं. Once we have selected the model, कौन सा मॉडल हमको यूज करना है, we start by training the model. हमारे पास लेबल डेटा है, हमने सारा डेटा लेबल किया हुआ. हम लोग एल्गोरिथम चूज करते हैं, हम लोग मॉडल के अंदर डालते हैं, मॉडल उसको ट्रेन करता है, मे बी फॉर 1 hour, मे बी फॉर 1 day, or maybe for 30 days as in case of GPT. It can be very cost effective, maybe costless, or maybe 20 rupees or maybe 20 million rupees. It all depends आपके पास कितना डेटा है, आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, एंड आपको फाइनल एक्यूरेसी क्या चाहिए. Once all this training is done, we test the data. हम लोग चेक करते हैं कि जो आउटपुट है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं. जनरली जो आउटपुट एक्यूरेसी है, डिपेंडिंग ऑन द केस, हम लोग देखते हैं कि 95% के ऊपर हो तो हम लोग एक्चुअली उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. बट इन सम इम्पॉर्टेंट यूज़ केसेस जहाँ पर आपको फेस अनलॉक करना है, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर हम लोग को 99.99% एक्यूरेसी से भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है. ठीक है, वंस वी नो द एक्यूरेसी वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. बट वट एवर पार्ट्स वी डिस्कस्ड, let's have a quick look on what are the technologies that we use. So Python is the most common language which is used for training the model. Python has a lot of libraries which can be used for machine learning activities. scikit-learn उसमें से एक है, TensorFlow एक और चीज़ है, इसके बदले आप keras यूज़ कर सकते हो, and various other frameworks. So ये frameworks आपको various functionalities provide करते हैं which helps you divide your data into train and test. देन आपको फाइनली इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं. आप पैरामीटर ट्यून कर सकते हो. देयर आर वेरियस अप्रोचेस एंड टेक्निक्स यूज्ड. आप क्लासिकल मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज करोगे जैसे रिग्रेशन, जहाँ पर हम लोग नंबर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और मे बी स्टेट ऑफ द आर्ट वेरी लेटेस्ट चीज़ें यूज करें जैसे GANs और मे बी GPTs. ऑल दीज थिंग्स कैन बी फाउंड आउट इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, जैसे एज्योर है,
ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, सेज मेकर है, ये अमेजोन प्रोवाइड करता है। सो हर एक बड़ी बड़ी कंपनी अपने डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करती है कि जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अंडर वन अम्ब्रेला प्रोवाइड की जाए, and it becomes very easy for any company to create their own AI models and AI systems. So parameters are two things that you need to remember. So whenever you create an AI model, or let's say I have an ML model, there are various things that you can change after you select the model. For example, what should be the training time? What should be the number of repetitions? What should be the learning rate? So all these things can be changed जब आप अपना ML मॉडल चेंज कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि जब आप रेपिटेशंस इंक्रीज कर दो, अपना लर्निंग रेट इंक्रीज कर दो, टाइम इंक्रीज कर दो, हो सकता है आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिले, बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो रही है, बट आफ्टर वन पॉइंट इट विल स्टार्ट बिकमिंग कॉन्स्टेंट, राइट? दिस कैन बी अ पॉइंट एट 99.99% accuracy. So at this point you need to know कि ये maximum parameters है जो आपको use करना है. So these parameters are also known as hyperparameters. Okay, so till now we have seen initially कि जब आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, आप प्लान करते हो चीज़ें, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, हम लोग को प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी है, डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, कौन लोग मैनेज करेंगे डेटा को, एंड देन फाइनली यू पास ऑन दिस डेटा टू द ML इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, जो लोग डेटा को रिफाइन करते हैं, कुछ एरर्स होंगे डेटा में तो निकालते हैं वो लोग, अपने ML मॉडल को ट्रेन करने के बाद इवेल्युएट करते हैं, फाइनली यू कैन यूज दिस मशीन लर्निंग मॉडल इन रियल लाइफ. बट बिफोर यूजिंग anything in real life, we need to test it very hard. We need to test it so that all of the conditions are met. For example, each and every car that is on the road, उसका जो मॉडल होता है वो अच्छे से टेस्ट किया जाता है ताकि रियल लाइफ में कुछ भी इश्यूज ना हो, बिकॉज रियल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा न्यू डेटा मिलता है. हो सकता है आपने बहुत सारे डेटा यूज़ किया हो ट्रेनिंग में, बट इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ सिनेरियोज, अ न्यू टाइप ऑफ डेटा कैन बी एनकाउंटर्ड. सो देयर हैज़ टू बी सम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कि आपका जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इवेंचुअली, डज इट नीड एनी एडजस्टमेंट्स, एंड देन स्पेसिफिक टेस्ट केसेस क्रिएट होते हैं कि यस ये हम लोगों ने टेस्ट केस कंसिडर ही नहीं किया था जब हम लोग अपना AI मॉडल बना रहे थे, एंड दैट कैन बी यूज्ड फाइनली. Finally, when all the testing is done, you can deploy your AI model. एंड जब ये AI मॉडल डिप्लॉय होते हैं जनरली वेबसाइट्स पे हो जाते हैं, वेबसाइट पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और मे बी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आप सिरी यूज़ कर रहे हो और मे बी गूगल असिस्टेंट आप यूज़ कर रहे हो. सो ये आपके डिप्लॉयड मॉडल्स हैं जो एक्चुअल रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं. सो दीज 3 steps आर यूज्ड every time a major AI system is created. Not only major, अगर आप कोई भी AI system create करोगे, so these are the 3 steps which are used. But eventually nothing is perfect. Even if you're the best in the world, you still need to train, right? Even if your model is performing 100%, there are new data that it can encounter. So you have to continuously improve its function. So that's why आप track करते हो अपना प्रोग्रेस, अपने सारे मेट्रिक्स आप ट्रैक करते रहोगे, सो दैट इवेंचुअली यू कैन ट्रेन योर मॉडल अगेन सो दैट इट बिकम्स इवन बेटर. सो दिस इज व्हाट AI लाइफ साइकिल लुक्स लाइक. फर्स्ट यू डिजाइन इट, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हो, अपना डेटा गैदर करते हो, डेटा को कलेक्ट करके उसको डिस्प्ले करते हो, उसको चेंज करते हो, ऑल्टर करते हो, सो दैट यू कैन सीक सम ट्रेंड्स इन द डेटा. देन यू ट्राई टू develop it in the terms of AI models, and then you finally test it out, and then you deploy it in real life, जहाँ पर आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हो अपना मॉडल, and you also monitor the model output, and according to these results you again try to improve it by designing the problem again,
maybe there is some new problem that is arising, or maybe you want to improve something. So this cycle is eventually continued. So let's now focus on the expected questions. हम लोगों ने सारी theory complete कर लिया. Let's quickly look at the need for AI lifecycle management, because each company wants to keep the name. Each company is very biased towards their name in the business, so that they do not make mistakes. उनका जो process है, उनका जो AI model है, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत robust होना चाहिए. इसलिए they define the steps which are well defined and strong. AI के कुछ metrics होते हैं, जैसे अगर आप एक chatbot बना रहे हो तो उसको response जल्दी आना चाहिए, उसकी quality अच्छी होनी चाहिए responses की. So all these metrics should be dealt with utmost caution. So इन सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके ध्यान रखने के लिए एक मॉडल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एक साथ ध्यान रखना AI मॉडल लाइफ साइकिल ईजी कर देता. हाउ मेनी स्टेजेस देयर आर इन AI लाइफ साइकिल? 3 स्टेजेस. प्रॉब्लम स्कोपिंग, डिज़ाइन और बिल्ड फेज, जहाँ पर आप AI मॉडल क्रिएट करते हो, and then finally when you deploy it in production. What are the main points covered in the design phase? It is the second phase. Main points are जहाँ पर आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा को एक्सप्लोर करोगे, वहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग करोगे, आप मॉडल्स क्रिएट करोगे और उसको टेस्ट करोगे. 2 sources of data as we discussed. प्राइमरी डेटा होता है जो कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ हाई क्वालिटी डेटा एंड इट इज़ काइंड ऑफ कॉस्टली ऑल्सो. बट सेकेंडरी डेटा तब यूज़ होता है जब आपका प्राइमरी डेटा इनफ नहीं है, जब आपको बहुत सारा और डेटा चाहिए. तो आप थर्ड पार्टी के पास जाओगे, जैसे वेबसाइट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जहाँ पर आपका डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है बट पता नहीं है कि वो डेटा एक्यूरेट होगा या नहीं. दैट्स वाई उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है एंड इसके लिए उसका जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा कम होता है. Some popular AI algorithms are neural networks, decision trees, random forest and logistic regression. So regression अकेला है जहाँ पर आपको values predict करनी होते हैं, बाकी हर जगह पे आप classification करते हो. Actually neural networks can also do values. They can also be used for regression. Okay, so with this we have finished the chapter of AI lifecycle management. Even though there was a lot of theory, it is very important for your board point of view. Next up, what you can cover is the capstone project as well as storytelling through data. Do not forget to like the video if you think that can be useful for the next batch of class 12 students. Please share it among your friends and do not forget to subscribe to the channel, because I will also be posting more about AI which can be used in your engineering. Alright, I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.